Welcome back. In this lecture, question is find Laplace of cos t into cos 2t. So, solution given function is Laplace of cos t into cos 2t, and we observe that यहाँ पर क्या है कि कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है। सो क्या करें, यहाँ पर त्रिकोणोमेट्री की हेल्प से हम इसको रीसेट करेंगे और हमारे पास जो अवेलेबल फॉर्मूला है उनके फॉर्मेट में क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। सो क्या किया, ऑन मल्टीप्लाइंग 2 एंड डिवाइड बाई 2 ऑल्सो, इस फंक्शन को हमने ऐसे लिखा एंड we observe that 2 cos a cos b means cos a plus b and cos a minus b. Why? Cos a plus b, a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin. अगर हम cos a माइनस b लिखें तो ये माइनस ये यहाँ प्लस हो जाता है, चेंज होता है, बस प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। इन दो इक्वेशंस को हम ऐड करें तो हमें 2 cos a cos b मिलता है। सो इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने इनको लिखा cos t plus 2t and cos t minus 2t, और we have 1/2 Laplace of cos 3t plus cos minus 3t, cos minus t, and we know that cos minus theta equal to cos theta, so we can write this step as 1/2 Laplace of cos 3t plus cos t. So we know that Laplace transform is a linear transform, so next step is 1/2 Laplace of cos 3t plus 1/2 Laplace of cos t, and we know that the formula for Laplace of cos at equal to s upon s square plus a square. So Laplace of cos 3t equal to, here a equal to 3, here this is equal to a, and so Laplace of cos 3t equal to s upon s square plus 9 plus 1/2, here a equal to 1, a equal to 1, so Laplace of cos t equal to s upon s square plus 1, so we can write 1/2 s upon s square plus 9 and 1/2 s upon s square plus 1, taking LCM, and we can write 2 s square plus 10 into s upon 2 s square plus 9 into s square plus 1, or taking 2 common from numerator, and we have final answer s into s square plus 5 upon s square plus 9 into s square plus 1 is the answer. So next question is find Laplace transform of sin square 2t and Laplace transform of sin power 3at. सो ये PYQ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 पार्ट है क्वेश्चन के, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे फिर सेकंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट वी हैव लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2t इक्वल टू 1/2 लाप्लास ऑफ 1 माइनस cos 4t by using the formula of cos 2a equal to 1 minus 2 sin square, and by using the linear property of Laplace transform we can write this step as 1/2 Laplace of 1 minus Laplace of cos 4t, and we know that Laplace of 1 equal to 1 by s, Laplace of 1 equal to 1 by s, and Laplace of cos 4t equal to s upon s square plus 4 square, or on simplifying we have 1/2s minus s upon s square plus 16
And taking LCM, and we can write final answer as 8 upon s into s square plus 16. Now second part is Laplace of sin power 380. So यहाँ पर इस टर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? We know that the formula for sin 3a equal to 3 sin a minus 4 sin qa. So by using this formula, we can write this sin power 380 equal to 3 sin 80 minus sin 380. So by the linearity property, we can write 3 by 4 Laplace of sin 80 minus 1 upon 4 Laplace of sin 380. So we know that formula for sin 80, Laplace transform of sin 80 equal to a upon s square plus a square, and here a equal to 3a, here a equal to 3a. So Laplace of sin 380 equal to 3a upon s square plus 3a square, and on simplifying we have 3a upon 4 s square plus a square minus 3a upon 4 s square plus 9 square, and finally we have 6a power 3 upon s square plus a square into s square plus 9a square is the final answer. So next question is, find Laplace transform of cos hyperbolic 4t. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता है. सो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे. सो वी हैव लाप्लास ऑफ cos पावर 4t इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर t एंड होल स्क्वायर. सो हम यहाँ पर पहले cos हाइपरबोलिक 2a इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस 1 होता है. सो यहाँ से cos हाइपरबोलिक स्क्वायर t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू को इस तरह से लिखेंगे. तो लाप्लास ऑफ 1 अपॉन 4 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2t होल स्क्वायर एंड लाप्लास ऑफ 1 अपॉन 4 1 प्लस 2 cos हाइपरबोलिक 2t प्लस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t. इसमें हमने क्या किया, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी होल स्क्वायर, और हमने लिखा हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. बाय यूजिंग प्लस 2ab, so by using this formula we have Laplace of 1 upon 4 1 plus 2 cos hyperbolic 2t plus cos hyperbolic square 2t. Or by linearity property we can write this step as 1 upon 4 Laplace of 1 plus 1 upon 2 Laplace of cos hyperbolic 2t plus 1 upon 4 Laplace of cos hyperbolic square 2t. नेक्स्ट अगेन अगेन हम फिर से इसको क्या करेंगे, अगेन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ cos 2a. सो हम फिर से इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो हम वी कैन राइट 1 अपॉन 4 लाप्लास ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 2 लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 2t प्लस 1 अपॉन 4 लाप्लास ऑफ 1 by 2 cos हाइपरबोलिक 4t प्लस 1. और नेक्स्ट स्टेप इज 1 upon 4 Laplace of 1 plus 1 upon 2 Laplace of cos hyperbolic 2t plus 1 upon 8 Laplace of cos hyperbolic 4t plus 1 upon 8 Laplace of 1. Or on compiling first and last term, so we can write 3 by 8 Laplace of 1 plus 1 by 2 Laplace of cos hyperbolic 2t plus 1 upon 2 Laplace of cos hyperbolic 4t. And we know that the formula for Laplace of 1 equal to 1 upon s. So Laplace of 1 equal to 1 upon s, and Laplace of cos hyperbolic 2t equal to s upon s square minus s square, means s square minus 2 square. Here a equal to 2, and Laplace of cos hyperbolic 4t equal to s upon s square minus 4 square
why a equal to 4. So on simplifying, we can write final answer as 3 by 8 s plus s upon 2 s square minus 4 plus s upon 8 into s square minus 16 is the find Laplace of Laplace transform of cos hyperbolic at minus cos at. So we have Laplace of cos hyperbolic at minus cos at. By the help of linearity property, we can write this step as Laplace of cos hyperbolic at minus Laplace of cos at. And we know that the Laplace transform of cos hyperbolic at equal to s upon s square minus s square. Laplace transform of cos at equal to s upon s square plus s square. Taking LCM both sides, LCM, and we can write s into s square plus a square minus s into s square minus s square upon s power 4 minus a power 4. Or final answer is s into 2a square upon s power 4 minus a power 4 is the answer. Find Laplace transform of 1 plus under root t whole square. So we have Laplace of 1 plus under root t square equal to, by using the formula of a plus b square equal to a square plus b square plus 2ab. So we can write this value 1 plus under root t square equal to Laplace of 1 plus t plus 2t power 1 by 2. And by using the linearity property, we have Laplace of 1 plus Laplace of t plus twice Laplace of t power 1 by 2. And we know that Laplace of 1 equal to 1 by s, Laplace of t equal to gamma 2 upon s power 2. Laplace transform of t power n equal to gamma n plus plus 1 upon s power n plus 1. So Laplace of t equal to gamma 2 upon s square plus Laplace twice Laplace of t power 1 by 2 equal to gamma of 3 by 2 upon s power 3 by 2. On simplifying, we know that gamma 3 by 2 equal to 1 by 2 into gamma 1 by 2, and gamma 1 by 2 equal to under root pi. So we can write gamma 3 by 2 equal to 1 by 2 into under root pi. 2 and 2 cancel. So final answer is 1 upon s plus 1 upon s square plus under root pi upon s power 3 by 2 is the Laplace transform of e power 2t plus 4t power 3 minus 2 sin 3t plus 3 cos 3t. So we have Laplace of e power 2t plus 2. So we have Laplace of e power 2t plus 4t power 3 minus 2 sin 3t plus 3 cos 3t. So by the linearity property, we have Laplace of e power 2t plus 4 Laplace of t power 3 minus twice Laplace of sin 3t plus 3 Laplace of cos 3t. The formula of Laplace of e power at equal to 1 upon s minus a. So Laplace of e power 2t equal to 1 upon s minus 2, and Laplace of t power n equal to gamma n plus 1 upon s power n plus 1. So Laplace of t power 3 equal to gamma 4 upon s power 4, and Laplace of sin 3t equal to a upon s square plus a square means 3 upon s square plus 9, and Laplace of cos 3t equal to s upon s square plus a square means s upon s square plus 9. On simplifying, we get final answer as 1 upon s minus 2 plus 24 upon s power 4 minus 6 minus 3s upon s square plus 9.
So next question is, find the Laplace transform of sin 3t into cos t. So we have Laplace of sin 3t into cos t, एंड यहाँ पर क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, सो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। सो क्या करेंगे, 2 sin a cos b, हम वी नो दैट sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a and sin b, and sin a minus b equal to sin a cos c minus cos a sin b. So by using this formula, we have 2 sin 3t upon into cos t equal to sin 4t plus sin 2t. So by the linearity property, we have Laplace of sin 4t plus Laplace of sin 2t. So we know that formula of Laplace of sin at equal to a upon s square plus a square. So here a equal to 4 and here a equal to 2. So we have Laplace of sin 4t equal to 4 upon s square plus 16 and sin 2t equal to 2 upon s square plus 4. Taking LCM, and finally we have 2s square plus 8 plus s square plus 16 upon s square plus 4 into s square plus 16. Or we can write 3s square plus 24 upon s square plus 4 into s square plus 16 is the answer. Question is, find the Laplace transform of sin t modulus of sin t. So we know that the nature of modulus is always positive. So we can write modulus of sin t equal to sin t. So Laplace of sin t equal to 1 upon s square plus 1. This is the final answer.